ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 11. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 11. துவாரகையில் கண்ணனுக்கு வரவேற்பு. சூத உவாச்ச ஆனர்தான் ச உபவ்ரஜ்ய ஸ்விருத்தான் ஜனபதான் ஸ்வகான் தத்மௌ தரவரம் தேஷாம் விஷாதம் சமயன்னிவ स उच्चकाशे धवलोधरोदरोऽपि उरुक्रमस्याधरशो न शोणिमा धाद्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यदाब्जषण्ढे कलहंस उत्स्वनः तमुपश्रित्य निनदं जगद्भयभयापहं प्रत्युद्ययुप्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतभलयो रवेर्दीपम् इवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर्हर्षगद्गतया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इवार्भकाः नतास्मते नाथसधाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च्य सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालप्रभवेत् परः प्रभुः भवायनस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मिदस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यर्ह्यम्बुजाक्षापससारभो भवान् कुरून्मधून् वातसुहृद्दिदृक्षया तत्राब्धकोटिप्रतिमक्षणो भवेद् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपां सम्मार्जितमहामार्ग रत्यापनकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्गुरैः द्वारी द्वारी गृहाणां च दध्यक्षतबलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य प्रेष्टमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्भो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोश्चसितशयनासन भोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः
प्रत्युज्जग्मूरतैर्हृष्टा प्रणयागतसात्वसाः वारमुख्याश्च सतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः नर्तकगन्धर्वा सूतमागधवन्दिनः गायन्ती चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमाददे ब्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमथैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रै सधारैस्थविरैरपि आसीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम् राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्यानुरुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदभिद्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरपानपात्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवरर्षैरभिवर्षितः पती पिशङ्गवासावनमालया भवौ घनो यथार्कोडुपशापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तस्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुधा ता पुत्रमङ्गमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मान शिशीशुर्नेत्रजलैः अथाविशत्स्वभवनं सर्वकामं मनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडशः पत्न्यः पतिं प्रोक्ष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना धुरन्थभावा परिरेबिरे पतिं निरुद्धमप्यास्रवधम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदाश्लापि यश्शरीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं स्वसनो यथानलं मिथो वदेनो परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् नवतीर्णस्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा
उद्दामभावपिशुनामलवल्कुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् सम्मुह्य चापम् अजहात्प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं गुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वाणं यतो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तथाश्रया तन्मे निरेभला मूढा स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविधो भर्तुर्ईश्वरं मतयो यथा ஸ்ரீமத் மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 11வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.